वेलकम टू ग्रोइंग क्राफ्ट फ्रेंड्स एंड आज हम करने वाले हैं हमारा डीआईवाई स्कल्पचर पेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर डीआईवाई क्राफ्ट्स। हाउ टू मेक योर स्कल्पचर पेस्ट एट होम। बट इसके पहले हमें कुछ सामान की तैयारी करके रखनी होगी। हमारा सिरामिक कप, देन वी विल नीड आवर ग्लू, वेरी इंपॉर्टेंट, सम वाटर, हमारा बेस एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें हमें ऑफ कोर्स शेड्स के लिए वी विल बी यूजिंग आवर एक्रिलिक कलर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू शुड नॉट मिस आउट इज सम कुकिंग ऑयल. Yes, it sounds weird, but it's important. Let's start making our DIY sculpture paste. So इसके लिए like I said हम हमारा सिरेमिक बाउल यूज कर रहे हैं। सिरेमिक बाउल इसलिए बिकॉज पेस्ट बनाने के बाद जब आप अपना जार क्लीन अप करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इजी टू क्लीन। सो आप कोई सिरेमिक कप या ग्लास कप जार कुछ भी ले सकते हैं, इट्स सुपर इजी. एड सम फेविकॉल, मैंने 3 टेबल स्पून ऑफ पीओपी लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मेरा 2 पोर्शन ऑफ फेविकॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थोड़ा सा कलर, अगर आपको कोई कलर ऐड नहीं करना है, यू कैन लिटरली हैव योर प्लेन वाइट. ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल एंड सम वाटर. वाटर अगर मैं आपको स्पून से मेजरमेंट बताऊं तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.5 teaspoons. And then you have to mix it in one direction only. This is very important. Do not mix it like da 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 da. Don't do that. Mix it in one circular motion and just make sure कि आप नीचे से उसको पूरा का पूरा scoop out करें. So once this is done, let's start making our flour. लेकिन उसके लिए पहले हम अपना preparation करते हैं. We will be needing a base, हमारा craft mat. Then we will be needing of course some palette knives and some damp cloth. Cotton cloths are good, and of course a sculpture paste. सो ये सब हो जाने के बाद लाओ लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट. सो पहले मैं अपने बेस के ऊपर अपना थोड़ा सा स्कल्पचर पेस्ट लगाऊंगी. यू कैन सी कितना क्रीमी, कितना स्मूथ है, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी रियली रियली गुड. अब हम हमारा सबसे छोटा वाला पैलेट नाइफ लेंगे एंड वी विल स्टार्ट मेकिंग पेटल्स फॉर दिस. सो जब भी आप अपना पेटल बना रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर पैलेट नाइफ इज रियली क्लीन एंड जो आपका पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी वेरी वेट ऑल्सो. आप जब बनाने लगेंगे विथ प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी वर्क्स फॉर यू. वेदर के हिसाब से, आपकी स्पीड के हिसाब से बहुत मैटर करेगा. सो लाइकवाइज अब हम यहाँ पर अपने सारे पेटल्स बनाते जाएंगे एंड वी विल बी एडिंग अ लॉट ऑफ पेटल्स हियर एंड देयर. सो अगर आप किसी भी पेटल से सेटिस्फाइड नहीं हैं, यू कैन ऑलवेज चेंज दैट एंड दैट वे यू विल बी creating your beautiful flower. Now let me start this music and enjoy your tutorial.
So here our flower is ready. I really hope you guys enjoyed this tutorial. Check out these beautiful flowers जो हमने same tutorial से बनाए हैं. I really hope you guys enjoyed it. Let me know your feedbacks in the comment section. Thank you. Take care and bye bye.